कौन पर निश विष काटी बस निश विष कौन काटी पूरा बस स्केलर डाटा आम पढ़ी ना पढ़ाई तो एटा पढ़ाई ओके स्केलर डाटा hold a single value have no internal component right number of internal component तो say previous जो slide रो तारो example से देछि right it is scalar data plsql provides a variety of predefined data type for instance you can choose from integer floating point character boolean date collection and lob types. This session covers the basic types that are used frequently in plsql program. A scalar data type holds a single value, has no internal component. Scalar data type can be classified into 4 categories, that is number, character, date and boolean. Right? Scalar data type is 4 जिनिस होता है. गोटे होचे number, character, date and boolean. Boolean टा होचे true or false return करे. Character and number data type have subtype that's associated a base type to a constant. For example, integer, right? Number or integer, and positive are subtype of the number base type, right? Number रे positive number टा जो आमे जो दबा सेटा होची तारा base type. यहाँ नो जे खाली positive number दबा आमे negative number भी दे परिया, but positive number टा होची तारा base type, right? For more information about scalar data, you will be as well as complete list guideline reference पछरे अछि हमर सेटा user guideline reference character char जोटा short form रे हम लिखुचे maximum length varchar 2 maximum length number precision and scale binary integer pls integer boolean binary float binary double right float आउ double भितर डिफरेंस कोन float तमरो double आउ float आउ double तमरो डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करे बट float रो साइज टे कम double साइज टे ह्यूज जेमति कैरेक्टर आउ varchar भितर डिफरेंस डिटो सेम राइट आउ तमरो pls इंटीजर आउ बाइनरी इंटीजर एउडा तमरो अछि सब्सिक्वेंट स्लाइड तमे ताको सेटा कोन केमिति यूज हुए सेटा तमे जानि राइट cap best type of for fixed length character data up to 32,767 bytes. If you do not specify a maximum length, the default length is set to 1. Right? जदि तमे character जतले data type नोचो तासे जदि length जदि मते जदि तमे जदि मेंशन करूनो ताले by default से गोटी ही character को accept करे जदि length mention न करूछो varchar 2 best type of variable length character data up to 32,767 bytes. There is no default size for varchar 2 variable and constant. Right? Varchar 2 रो कौन सी default size नहीं तमे दे परिवा data. Number having precision p and scale s. The precision p can range from 1 through 38 1 to 38 जाइन रहिबो and scalar होची तमरो s can range from 84 through to 127 माने ताठो अधिका right binary integer base type of for integer between तमरो length दला एतिकी length through एतिकी length जाइन तमरे binary integer तमे accept कर सकि then pls integer base type for signed integer between length this length to this length pls integer value requires less storage are faster than the number values the oracle database 11g the pls integer and binary integer data type are identical the arithmetic operation on pls integer and binary integer value are faster than the number value एटा केवल ओरेकल रे तमर 11g तमर फीचर्स तमर अछि pls इंटीजर और बाइनरी इंटीजर एटा कोन तमे जते ता भीतर वैल्यू जते दाउछो एटा नंबर जो इंटीजर टू माने इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप टू टिके फास्टर तमर काम से कर बुझला
boolean true or false return karibo, right? Binary float represent floating point number dela format. It requires 5 byte to store the value माने size टा तारा 5 byte जाए तम जुगे, but in binary double रे 9 byte store जाए जो माने टिके large size जाए तम जुगे हला सही floating value से accept करी. Base color data type date, time stamp, time stamp with time zone, time stamp with local time zone, interval year to month, interval day to second. एगुड़ा सब प्राय तो तमरो date and time तमरो base color data type रे तमर जाए. जेम जा मोबाइल रे नुआ मोबाइल जेता आनु छ या फिर मोबाइल टाको जेता रिस्टोर करू छ सेताळे तुमको टाइम डेट एंड टाइम सेट करिया पड़छ. तमे कोन दउछ कोलकाता टाइम अनुसार तमे दउछ से जो डेट एंड टाइम ता जोडा सेटा होची ओराकल रे डाटाबेस रे तमर हेछि, राइट. से जो सेटा होची तमरो बेस कलर डाटा टाइप. अब से तो गोटे डाटा स्टोर हेक रहउची ना, गोटे इन्फॉर्मेशन स्टोर हेक रहउची. तो से जो डेट एंड टाइम रो डाटा जो स्टोर होची तमरो कलर डाटा टाइप थ्रू तमर स्टोर होची. बुझला? तो देला से date का मोर best type for date and time. Date value include the time of the day in second since midnight. The range for date dala se range का dala. Timestamp, the timestamp data type which extend the date data type store the year, month, day, hour, minute, second and fraction. It also तुम्हारा timestamp, right? And timestamp with time zone, local time zone. Timestamp with time zone data type which extend the timestamp date data type include time zone displacement. The time zone displacement is the difference in hours and minutes, right? जेमती तमे धरो एठू गलो लंडन गलो तो लंडन रो टाइम स्ट्रक्चर हमरो टाइम स्ट्रक्चर भितर डिफरेंस अछि, राइट. तमे जो लंडन को जीवो सेता तमरो टाइम स्टैम्प विथ लोकल टाइम जोन ता एडजस्ट हे जीवो. तो लंडन टाइम अनुसार तमरो डाटा स्टोर कर. बुझला? local time zone data type which extend the timestamp data type includes time zone displacement. The time zone displacement is difference in hours and minutes जोटा कि मैं तुमको एबे कहली, राइट. एटा टाइम्स विथ टाइम जोन आउट टाइम स्टैम्प विथ लोकल टाइम जोन भितर विशेष किसी डिफरेंस नहीं. केवल तमरो टाइम जोन टाइम स्टैम्प ताकू टिके एक्सटेंड भाबरे एडवांस फीचर्स बारे से माने एक्सेप्ट करो. एबे तमे मोबाइल जाउछो धर तमे पटिया रु आसलो नयापल्ली को आसलो मोबाइल लोकेशन देखोनी नयापल्ली एतिकी डिग्री सेल्सियस तमरो अछि नयापल्ली रे. पटिया गले तमरो पटिया लेखा होतो तमरो एरिया ना लेखा होतो तेन तापर तमरो देखा होतो एतिकी डिग्री सेल्सियस तमरो अछि सेटा तमरो टाइम स्टैम्प विथ लोकल टाइम जोन सेटा जाय. बुझले? Interval year to month. You use interval year to month data type to store manipulate interval of years and months. The syntax is interval year to month where precision specify the number of digit in the year field. दीटा year रा मोरो difference टा जाने पे हेले interval year to month मते use करिया को पड़ी, right? Month calculate. then तमरो कहते तुम जो अप्लाई कर गवर्नमेंट एज क्राइटेरिया मागुच, राइट. तुमको 30 एज जदि होताले अप्लाई कर पारिबो नले अप्लाई कर 30 एज रु एक्सीड हेले अप्लाई कर पारिबो. से जो कैलकुलेशन टा जो करूचो तुम फिजिकल जो कैलकुलेशन टा जो करूचो से कैलकुलेशन टा मु ओराकल रे एई फार्मूला टा एई डाटा टाइप रे पकेले से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करी मत देबो. बुझला? इंटरवल डे एडा होछ मोर मंथ कैलकुलेट करबो एडा होछ मोर डे कैलकुलेट. बुझला? declare dala se declaring scalar variable declare v underscore employee job emp underscore job varchar 2 dala v underscore count underscore loop binary integer equal to 0 assign kala. तो जो वैल्यू असाइन करिया पे मोर एई सिंबल टा यूज करा जाय, राइट. काली में हमें पढ़ी थी. देन v underscore department underscore total underscore salary number 92 equal to 0 मोर दला. v order date cease date माने current date plus 7 माने current date to 7
ऐड कर दबो जति की आसीबो सेति then c underscore tax underscore rate constant number 3,2 equal to 8.25 value asset v underscore valid boolean not null true right boolean value asset kala se true asset kala declaring scalar variable the example of variable declaration shown in the slide are defined as follows v underscore emp underscore job variable to store an employee job title माने description देछि से variable उडा कोन कोन declare करछि तार description देछि then second variable count loop variable to count the iteration of loop integer to 0 ru start hob right v underscore department underscore total underscore cell variable to accumulate the total salary for a department initialized to 0 initialization है v order date variable to store the ship date of an order initialized to 1 week from today c underscore tax underscore rate constant variable for the tax rate तापर से value से देला 8.25 right जोटा कि मोर plsql चेंज हे न हे परि टैक्स टा के चेंज हो जी और असाइन करला माने से टैक्स टा तो रहइला राइट v underscore valid flag to indicate whether a piece of data is valid or invalid initialized to true right valid हो कि invalid हो initialized मोर true रहइला percentage type attribute is used to declare a variable according to a database column definition. Another declare variable is prefixed with the database table and columns name, the name of the declare variable. कौन percentage type attribute कौन देखो? In plsql variable are usually declared to hold and manipulate data stored in a database. When you declare plsql variable to hold column value, you must ensure that the variable is of the correct data type and precision. If it is not, a plsql error occurs during execution. If you have to design large subprogram, this can be time consuming and error arises, right? जेता तमरा मोर plsql कोन variable declare करा होची केवल मोर value टाको store करिया के रखिया पाए तर column रो value टाको store करिवि variable भीतर जो value टा store होची सेटा single value store होची राइट जदि मु column रो value टाको store करिवि ता पय मते percentile type attribute मते दरकार बुझला rather than hard coding the data type and precision of the variable you can use the percentile type attribute to declare a variable according to another previously declared variable or database column. The percentile type attribute is most often used when the value stored in the variable is derived from a table in the database. When you use the percentile type attribute to declare a variable, you should prefix it with the database table and column name. If you refer to a previously declared variable, prefix the variable name of the previously declared variable to the variable being declared, right? So instead of individual variable declare करबा अपेक्षा तमे percentile type attribute तमे जदी यूज करछो ताले तमर पूरा कॉलम रो वैल्यू गोटे जगह रे स्टोर हे कि तमर रहि जबे बुझला percentile type attribute continued advantage of percentile type attribute you can avoid error caused by data type mismatch or wrong precision right mismatch habani tamara here you can avoid hard coding the data type of a variable you need not change the variable declaration if the column definition changes if you have already declared some variable for a particular table without using the percentile type attribute the plsql block may throw error if the column for which the variable is declared is altered. When you use the percentile type attribute, plsql determines the data type and size of the variable when the block is compiled. This ensures that such a variable is always compatible with the column that is used to populate it. Right? जदि तुम प्रथम variable declare कर देइछो सेताळे तमरो मे बी तमरो डाटाटा क्रैश हबार संभावना अछि माने वेरिएबल भीतर कैपेबिलिटी कोन गोटे डाटा स्टोर कर रखिबो सेते जदि गोटे रु अधिक डाटा रहइबो
ताले क्रैश हे जो माने पॉसिबिलिटी अछि तो पर्सनल टाइप कोन से तुमको होल्ड कर रखिबो माने तमे ता भीतर जेतेटा वैल्यू तमे पास करो से ता भीतर ताको अलाउ करिवो जे स्टोर करि रखिया बुझला declaring variable with the personal type attribute जेमते इटी identify table dot column name personal type variable ना declare कली right then को table रु employees table रु को column रो value टाको मु variable भीतर store करिवि last name column रो value variable भीतर store करिवि खाली तुमको personal type तुमको दबा ऐड करिवार अछि एती काम बुझला variable name गोटे दबो table dot column name then personal type बुझला then एटी देछि गोटे normal variable डिक्लेयर करछि v underscore balance तार डाटा टाइप देछि नंबर साइज देछि 7 और 2 v minimum balance एटा गोटे variable डिक्लेयर करछि एटा v balance माने ए जो वैल्यू ता जो आसीबो सेटा मोर पर्सनल टाइप मोर असाइन करछि एंड सेरे 1000 मोर डाटा माने 1000 वैल्यू मोर स्टोर करछि राइट बुझला declaring variable with the personal type attribute declare variable to store the last name of an employee the v underscore employee underscore last name variable is defined to be to be of the same data type of the v underscore last underscore name column in the employees table the personal type attribute provides the data type of the database column रो डाटा टाकू से स्टोर करी रखुची v underscore last underscore name बुझला declare variable to store second example टा एटा right declare variable to store the balance of a bank account as well as the minimum balance which is 1000 rupees the v underscore min underscore balance variable is defined to be of the same data type as the v underscore balance variable the personal type attribute provides the data type of a variable right एठी थिला मोर ए जो एग्जांपल ता थिला मोर डाटाबेस रो कॉलम रो डाटा टाको से स्टोर कर रखला v underscore employee underscore last name बट एठी कोन दैछि एठी मोर टेबल तो देनी एठी दैछि वेरिएबल जोडा डिक्लेयर करछि से वेरिएबल ऊपर पर्सनल टाइप ता दैछि इट मींस कोन एटा काहा को आइडेंटिफाई करूछि एटा आइडेंटिफाई करूछि द पर्सनल टाइप एट्रिब्यूट प्रोवाइड्स द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल टाको इंडिकेट करछि बुझला एटा होछि डिफरेंस टेबल नेम मेंशन करछि सेटा डाटाबेस रो कॉलम टाको पॉइंटिंग करिवो बट जेता वेरिएबल नेम पास करछि सेटा वेरिएबल रो डाटा टाइप टाको से पॉइंटिंग कर बुझला A not null database column constraint does not apply to variable data the variable data declared using personal type therefore if you declare a variable using the personal type attribute that use a database column defined as not null you can assign the null value to the variable बुझला declaring boolean variable only true false and null value can be assigned to a boolean variable right conditional expression use the logical operator and or and the unary operator not to check the variable values the variable always field that is true false or null arithmetic character and data expression can be used to return a boolean value right declaring boolean value variable with plsql you can compare variable in both sql and procedural statement this comparison called boolean expression consists of simple or complex expression separated by relational operator in a sql statement you can use boolean expression to specify the row in a table that are affected by the statement in procedural statement boolean expression are the basis for the conditional control right null stand for missing inapplicable or unknown value null केतरा असाइन होची जेतले तमरो कोनोसी डाटा मिसमैच हेची किबा मिसिंग अछि किबा तमर से डाटा नाही किबा से डाटा इनकरेक्ट अछि सेतले मोर null value असाइन बुझला बुलियन फॉर एग्जांपल
एम्प्लॉय सैलरी 1 इक्वल टू 50,000 तापर 2 इक्वल टू 60,000 देला द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एल ट्रू एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन टू एम्प्लॉय सैलरी 2 चेक करिवो एटा होची बुलियन एटा चेक करिवो जदि ट्रू अछि ताले ट्रू देखेबो जदि ट्रू नाही ताले फॉल्स देखेबो तो सेट पॉइंट तळे देला से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर फ्लैग बुलियन फ्लैग होची मोर वेरिएबल नेम बुलियन होची डाटा टाइप इक्वल टू बाय डिफॉल्ट मु फॉल्स देसी राइट देन बिगिन फ्लैग इक्वल टू ट्रू जेटा एटा चेक करिवो जदि मोर ट्रू हैला ताले ट्रू देखेबो हैला बुझला बुलियन एक्सप्रेशन बुझलो एठी मोर वैल्यू दीटा असाइन कला ठीक अछि देन एक्सप्रेशन को चेक कला ट्रू आइदर ट्रू और फॉल्स को चेक कला से एठी देन बुलियन रे मोर सेटा थ्रो आउट कला तो बुलियन डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ना ट्रू जो बुलियन डिफॉल्ट वैल्यू से फॉल्स रखी छी बुलियन डिफॉल्ट वैल्यू से फॉल्स देन एक्सप्रेशन चेक कला पर से ट्रू रखला बुझला कारण सैलरी 1 टा लेस देन टू सैलरी 2 तो ट्रू आसीबो एलओबी डाटा टाइप वेरिएबल सेतरे मोर ब्लूक अछि जेमति तमरो काली जेमति पढितली सी लोब बी फाइल एनसी लोब काली मो पढितली जेमति एवडा सब मोर एक्सप्रेशन तार हला लोब डाटा टाइप वेरिएबल large object lobe are meant to store a large amount of data. A database column can be of the lobe category. With the lobe category of data type B lobe, C lobe and so on, you can store blocks of unstructured data such as text, graphic, image, video clips and sound wave forms. एगुडा सबु को मु नॉर्मल डाटा टाइप रे मु स्टोर कर परिबे एगुडा सबु को मबा एलओबी दरकार लोब डाटा टाइप दरकार तो लोब डाटा टाइप रो पुनी वेराइटी अछि सी लोब बी लोब एनसी लोब राइट वेराइटी अछि जो प्रकार डाटा से प्रकार डाटा टाइप रे मु ताको स्पेसिफाई करी बुझला the character large object C lobe data type is used to store large block of character data in the database. The binary large object B lobe data type is used to store large unstructured or structured binary objects in the database. Bujhala? Then binary file data type is used to store large binary file. Unlike other lobes, B file, BF file are stored outside the database or not in the database. They cloud be operating system file. जेमती मोर क्लाइंट मान कस्टमर मानकर डाटा मोर मोर एमिति डाटा बेस रो कैपेसिटी नो जे पूरा कस्टमर डाटा को मु स्टोर कर रखी जेमती रिलायंस रो कस्टमर डाटा और रिलायंस कस्टमर डाटा कोन रिलायंस रो शॉपिंग मॉल अछि राइट रिलायंस स्मार्ट अछि रिलायंस फ्रेश अछि रिलायंस जियो अछि राइट तो सब कस्टमर रो डाटा ता पाखे जेते रहिबो स्टोर हो जेते ता पाखे एते बड़ डाटाबेस नै जे सबुतक डाटाबेस माने वर्ल्ड रो सबुतक डाटा ता पाखे निज पाखे रखी से कोन करे ताको क्लाउड रे राइट तो बी फाइल ता मोर क्लाउड रो ताको एक्सेस बुझला composite data type record and collection plsql record true 23 December 98 Atlanta then image store kala plsql collection eta hochi record collection kono 1 2 3 4 then tara na show kala then 1 2 3 4 then tara number show kala एटा मोर plsql integer data type मोर दिएछि एटा varchar दिएछि एटा मोर integer दिएछि एंड एटा मोर number दिएछि बुझला data type composite data type record and collection as mentioned previously a scalar data type hold a single value and has no internal component composite data type called plsql record and plsql collection have internal component that you can treat as individual variable. In a plsql record, the internal component can be of different data type are called fields. Right? plsql रे मोर different data type जेतरा मेंशन कराबे ताको जे fields. बुझला?
You access each field with the syntax record underscore name dot field name. Right? A record variable can hold a table row or some columns from a table row. Each record field corresponds to a table column, right? In a plsql collection, the internal components are always of the same data type, are called elements. You access each element by its unique subscript. List and arrays are classic example for collection. There are three types of plsql collection: associated array, nested tables, and v array types, right? Variable array types. In plsql, record or associated array are used. arrays माने कौन? Similar data रो value गोटे group रे रखिया पे मते array तक हुआ जाए, right? Similar data type रो values गोटे group रे जदि मु रखिबी, more than one value जदि मु गोटे group रे रखिबी तक हुआ जाए array, right? array are covered in the lesson title working with composite data type, right? एही lesson ने हमें ताकू जानि परिबा array रो meaning ता कौन, right? सेही lesson ने हमें पढ़िबा array रो meaning ता Nested tables and VRA data type are covered in the course of Oracle database 11G advanced plsql. आप अच्छे advanced plsql से हमें जानिबा nested table और VRA बुझला एटा हमें काली स्टार्ट करबा एजेंडा bind variable हला bind variable टा काली स्टार्ट करबा ओके थैंक यू